What did we do in the last class? सोशल सिक्योरिटी आज होगा कि ग्रेजुएटी में कौन सा सोशल सिक्योरिटी लगता है. तो उसके लिए पहले ब्रीफ करो, then start. Tell me what is social security? What is social security? Because gratuity, the concept of gratuity and the Gratuity Act 1972 is a social security legislation. So, in order to understand gratuity completely, you need to be very clear about what is social security also. Okay, I already told you what is social security in the class of ESI. So let's just quickly do the revision thing. What is social security? There are many definitions of social security. If you read different books, probably you will find different definitions. But one comprehensive definition that I feel is appropriate to define social security, I already told you. So can you quickly revise what is social security? Social security is just 6 types. First is sickness. Second is death. Third is old age. Fourth is physical disability. And fifth is maternity. And sixth is unemployment. So what is social security? You told me that these are the types of social security. These are the conditions in which social which is compensate, which are the condition is is taken for the compensation. Give compensation. Social security is a policy and act which is enacted by the central government for the welfare of the people who work under an organization. See, social security is not just enacted by central government. There are some social securities whose enactment and implementation both could be of appropriate government. This appropriate government could include state government also, right? In the nutshell, what we need to understand is that what is social security? Social security is that condition of life where either the working capacity of an individual is reduced or completely gets over. Okay? आपकी वर्किंग कैपेसिटी या तो घट जाएगी, आप जितना काम कर सकते हैं उस कैपेसिटी पे आप काम नहीं कर सकते हैं ड्यू टू सम कंडीशंस, or in some conditions like death, the working capacity is completely over, right? To protect the workers under those circumstances, the government gives, or that the government has brought in the provisions of social security. Okay. In ESI, we understood what types of and what conditions of social security does that act contain for the workers working under. Okay, 21,000 was the upper ceiling in ESI. But when we deal with gratuity, this is also a kind of social security legislation, right? And here, every employee working in the organization is eligible for social security. There is no ceiling or something like that. Okay, so side by side, you also start understanding the difference in act, the difference in the same terminology which is used in different acts, right? So every employee working in the organization is eligible for social security of gratuity, provided what were the conditions? Tell me. Six condition. नहीं, gratuity avail करने के लिए to be eligible. Okay. What was the condition? I think I briefed you in the last. Superannuation. Sorry. Voluntary retirement. Notice for resignation. Death. He's got chronic diseases. Chronic disease. Chronic disease and disability. Very good. These were the conditions under which gratuity will be provided to you in the organization. Fine. Under these conditions, you can avail the gratuity benefits from the organization. Also, these were what you said are the conditions for gratuity payment. But for an employee to be eligible for gratuity payments, what is that criteria? Someone else? Rajat?
I'm a person who render more 5 year or of the continuous service, then he is able to get the gratuity from that Yes. organization. Yes, true. A person, an employee who is employed in an organization and he renders 5 years of continuous service at least to the organization, that will he will be eligible for gratuity payment. Okay, but such conditions do not hold true in case of death and disablement. Okay, क्योंकि both these conditions are very very uncertain. In that cases, the gratuity payment would be before that 10 years. Also, in the last class, we dealt with the fact that gratuity is a legal right of an employee working in the organization, but still the employer has the Rajat. Is there something funny going on? But still, we understood that the employer has the rights to partially or wholly forfeit your gratuity benefits under some circumstances. Okay? किसी भी एम्प्लॉयर को ये राइट है कि आपकी ग्रेचुटी की पेमेंट को either partially or wholly रोका जा सकता है. What were those conditions? Razvi, you tell me. मैम व्हेन मैम जब वो तोड़ फोड़ कुछ उनका सामान वगैरह जो एम्प्लॉय है उनका एसेट को खराब कर देता है तब, और दूसरा केस था सर मैम उसका जब मतलब जो बिहेवियर है वो बहुत सही नहीं है और मैम बस इतना ही है. अच्छा बोला तो तुमने सही, but just try to make it in its technical word. जो टेक्निकल टर्म ही, क्योंकि आप लॉ पढ़ रहे हैं, है ना. लॉ में हम, लॉ इज नॉट लाइक लिटरेचर. We cannot make up our own language. We need to write the language written in law. Fine. So act या law जब भी पढ़ेंगे तो ये ध्यान रखेंगे कि we are using the same terminology more, I mean, as much as possible. Who's this? Abhishek. You tell me. What, ma'am? What were the conditions for partial or wholly forfeiture of gratuity by the employer? On that day, I did not get it. Achha. I'm still recovering. Then you write down. See, Okay. the first case is in case of major misconduct. Right? In case of major misconduct. अगर आपने कंपनी में कोई बहुत मेजर मिसकंडक्ट किया है, there has been a case against you and that has been proved that you have been accused of some major misconduct, not minor but major misconduct. In that case, the employer has the right of partial or wholly forfeiture of your gratuity benefits. Second one is moral turpitude. Okay? As long as you are working in the organization, you are expected to be morally correct to the organization. That you do not do anything which is immoral, unethical for the organization. You should always be loyal and you should keep working towards the betterment of that organization. Right? The third one is damage to employer's property. Right? You have to make sure when an employee works in an organization, you have to make sure that all the assets of the organization, all the property of the organization should be taken proper care of, right? And you should not be damaging those properties or those assets of the employer because of some discrepancies that you have with that employer or because of some other reason, your own personal maladjustment in the organization. You are not supposed to do this. So in case you do this, the employer, it is his discretion to either partially or wholly forfeit your gratuity. Okay. And then there is one that Razvi already said, it's riotous or violent behavior. Your behavior should be in accordance with the discipline
law and order of that organization. You are not supposed to behave in a manner which is not acceptable in the organization. Your behavior should not be violent. Your behavior should not be riotous. Your behavior should not be such that you're instigating other persons to be riotous or violent in that organization. Okay. Now, then we dealt with what is, ठीक है, we talk about gratuity payment, पर कितना payment मिलेगा? Okay, there should be some calculations about what should be the payment of gratuity given to the employees. Now, this was the bone of contention. यही झगड़े की बात थी पहले, जब gratuity payment को लाने के पहले एक background, I already told you the background that was there for the government, for the central government to enact this law, because gratuity payment is law के enact होने के पहले भी payment की जा रही है, लेकिन फिर बाद में इसका कोई शॉर्ट प्रिंसिपल नहीं था पेमेंट का कि कितना अमाउंट पे किया जाना चाहिए। एम्प्लॉयर को जो पेमेंट करते थे उनको लगता था दैट इज सफिशिएंट, बट एम्प्लॉइज जो पेमेंट लेते थे दे यूज्ड टू फील दैट दिस इज नॉट सफिशिएंट एंड दिस यूज्ड टू बी द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयर्स. So the central government came up with the provision of calculation of gratuity in this Gratuity Act 1972. Now, that day, and this act, the payment of gratuity act, the calculation, it varies in different organizations, right? So that day I already told you there are two types of organization. What are those? Ma'am, perennial and seasonal organization. And what is that? You don't tell me. Someone else. Rajat, you tell me. Rajat, you tell me. What is perennial organization and what is seasonal organization? क्या मैम? पेरिनियल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है और सीजनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? मैम पेरिनियली मतलब हो गया कि जो मोर देन 6 मंथ होगा, और दूसरा क्या बोली थी मैम? सीजनल. दूसरा सीजनल देखो, राउंड द ईयर जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम होता है उसको पेरिनियल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं. ठीक है, पेरिनियल रूट सुना है? पेरिनियल is a common word. You understand this in context of organization now. Perennial means round the year जहाँ जिस organization में काम होता है that is perennial organization, and जिसमें season की वजह से round the year काम नहीं हो सकता है 6 months or so, less than 6 months, उसको हम seasonal organization कहते हैं. जैसे उस दिन एग्जाम्पल देके बताया था कि ओपन कास्ट माइनिंग, राइट? ओपन कास्ट माइनिंग में बरसात के टाइम पे काम करना मुश्किल होता है क्योंकि उसमें पानी चला जाता है. So the work gets hampered and you cannot work throughout the year with gratuities. So there, the calculation of gratuity is different in perennial organization and in seasonal organization. When we talk about, ये लिख लो, ये इम्पोर्टेंट होता है, ये लिख लो कि कैसे काम कैलकुलेट करते हैं. कैलकुलेशन ऑफ ग्रेच्युटी लिख लो. आज हम लोग ग्रेच्युटी खत्म कर लेंगे. ओके, टुडे विल फिनिश ग्रेच्युटी एंड फ्रॉम नेक्स्ट क्लास एंड स्टार्ट अ न्यू टॉपिक. When we calculate gratuity in terms of perennial organization, we take 15 days. We counted 15 days per year of service. But when we talk about seasonal organization, we take 7 days payment. We give 7 days per year of payment to the employees. Okay? Perennial organization में 15 दिन और सीजनल ऑर्गेनाइजेशन में 7 दिन का पेमेंट मिलता है पर साल. ओके, अब कैसे कैलकुलेट करते हैं? ठीक है, 15 दिन की सर्विस पेरिनियल ऑर्गेनाइजेशन में दी जा रही है, बट 15 दिन किस साल का वेज? सपोज एन एम्प्लॉय ज्वाइन
2001 में किसी एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया और 2022 तक उसने काम किया, ठीक है, 2001 में ज्वाइन किया और 2022 में उसने काम किया, लगभग 20 साल या 20 साल से थोड़े ज्यादा का टेन्योर हुआ उसका, होगा ना काम करने का। तो Yes, ma'am. तो उसको ग्रेचुइटी का पेमेंट किस सैलरी के हिसाब से मिलेगा, जब उसने ज्वाइन किया तब या जब वो छोड़ रहा है तब? अब जब तो रिजाइन कर रहा था। बाकी लोग सोच के बताओ क्या होना चाहिए। मैम रिपीट करिएगा, क्वेश्चन क्या है? सपोज करो कि किसी एम्प्लॉय ने कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया 2001 में, ओके, और वो 2022 तक वहां पर काम करेगा और 2022 में निकलने के टाइम पे अब नाउ ही विल क्लेम हिज ग्रेचुइटी बेनिफिट्स, राइट? सो यू टेल मी कि उसको जो 15 दिन का कैलकुलेशन सैलरी पे मिलेगा 15 डेज पर ईयर ऑफ कंप्लीटेड सर्विस, यानी मान लो मोटा मोटी 20 साल उसने काम किया, 20 साल का ग्रेचुइटी उसको मिलेगा। तो ये 20 साल यानी कि 15 दिन एक साल का, यानी 20 साल में तुम उतना मल्टीप्लाई कर लो। लेकिन Yes, ma'am. सैलरी कैलकुलेट किस सैलरी के बेसिस पे होगी, जब उसने ज्वाइन किया था तब या जब वो छोड़ रहा है तब? मैम जब रिटायर करेगा तब। Yes, देखो ma'am. ग्रेचुइटी हमेशा रिटायरमेंट में नहीं आती, तुम लोग रिटायर सारा सोशल सिक्योरिटी को रिटायरमेंट पे लाके लटका देते हो, ये रिटायरमेंट नहीं है। अगर वो 5 साल से ज्यादा छठे साल पे भी रिजाइन करेगा तो पढ़े लिखे ना कंडीशंस में अभी कि रिजाइन करेगा तब भी मिलेगा, then why you don't need to mention retirement every time, है ना? कि ग्रेचुइटी अगर तुम 5 साल कहीं काम कर लिया और छठे साल में छोड़ रही हो तो तुम तो एलिजिबल हो ना ग्रेचुइटी बेनिफिट्स के लिए। ओके, सो Yes, ma'am. तो तुम बताओ अभिषेक, व्हाट डू यू थिंक कि कैसे पेमेंट होना चाहिए, जिस साल ज्वाइन किया उसके सैलरी के हिसाब से या जब वो छोड़ रहा है उस सैलरी के हिसाब से? मैम जब वो छोड़ रहा है तब सैलरी के हिसाब से। हाँ, जब वो छोड़ रहा है उस सैलरी के हिसाब से। क्यों? क्योंकि जब वो ज्वाइन किया तब तो सैलरी बहुत कम रही होगी, अगर उसका ग्रेचुइटी पेमेंट कैलकुलेट किया जाएगा तो इट विल नॉट बी दैट सब्सटैंशियल एन अमाउंट, राइट? तो जो सैलरीड एम्प्लॉयज होते हैं उनकी लास्ट मंथ की सैलरी, ठीक है, अच्छा, एक जब ग्रेचुइटी का कैलकुलेशन होता है तो ये माना जाता है कि एक मंथ का 4 संडे हटा दिया जाता है, ठीक है। लमसम अगर ये मानो कि एक महीने में 30 दिन है, 4 संडे हटा दो तो 26 दिन बचा, Yes, ma'am. ठीक है। तो लास्ट सैलरी जो लास्ट मंथ से अगर सितंबर में रिजाइन किया तो उस मंथ की सैलरी, लास्ट सैलरी डिवाइडेड बाय एक मंथ की सैलरी हुई, दैट इज डिवाइडेड बाय 26। कितने दिन काम किया तो क्या निकला? एक दिन की सैलरी निकली उसकी। Yes, ma'am. कोई कंफ्यूजन? ये तो सिंपल मैथ है एकदम, Yes, ma'am. है ना? लास्ट मंथ की सैलरी डिवाइडेड बाय 26 इज 1 डे सैलरी। यस, एवरीबॉडी एग्री? Yes, ma'am. यस मैम। 1 डे सैलरी हुई। और ग्रेचुइटी के लिए कितने दिनों की सैलरी दी जाती है? 15 दिन की। 15 दिन। 15 दिन। वो एक मंथ की सैलरी हुई। अब उस साल का 15 दिन उसको मल्टीप्लाई करो 15 से, उस साल का पेमेंट निकल गया उसका। अब उसको मल्टीप्लाई करो नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस से, कितने साल उसने काम किया, Yes, ये हो जाएगा तुम्हारा ग्रेचुइटी पेमेंट। ठीक है, समझ में आई बात? समझ में आई? किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो मैम। अब देखो, एम्प्लॉयज ऐसे भी तो होते हैं जो शायद डेली वेज पे काम करते होंगे, राइट? उनकी सैलरी कैसे कैलकुलेट? वो तो हो सकता है कि 4 संडे को छोड़कर और ज्यादा दिन छुट्टी लिए हो या ऐसा कुछ हो सकता है कि नहीं? राइट? उनकी सैलरी का कैलकुलेशन अलग तरीके से होता है। देखो, फॉर डेली वेजेस वर्कर लास्ट 3 मंथ की सैलरी, ठीक है, लास्ट 3 महीने की सैलरी डिवाइडेड बाय
नंबर ऑफ डेज दे हैव वर्कड, उन्होंने कितना काम किया है ये निकल जाएगा उनका सैलरी एक दिन का। हो गया। अब उसको तुम 7 से कर लो जो डेली वेजेस पे होंगे, अगर सीजनल में है तो 7 और पेरिनियल में है तो 15। समझ में आई बात? इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को? नो, यहाँ तक डन है। दिस वाज द रिविजन दैट वी वर डूइंग in the last class. Also I was telling, I have already told you all of these things. Now what happens, see why I was not telling you further that day, because this is act, धीरे धीरे करके पढ़ोगे, धीरे धीरे करोगे तो समझ भी आएगी और इंटरेस्ट भी बना रहेगा। ठीक है, now you write new topic for today, controlling authority. See, in the last class we understood that this act is enacted by central government, right? बट इट्स इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि ये स्टेट्स में कैसे कैसे लगेगा और इसको लेकर के कोई भी एक्ट लगता है तो क्या उसमें प्रॉब्लम नहीं आती है बाद में? उसके उससे उस प्रॉब्लम से रिलेटेड सैकड़ों इश्यूज हो सकते हैं। हो सकता है एम्प्लॉयर पेमेंट करने से मना कर दे लीगल होने के बावजूद, ये हो सकता है ना, या फिर कम पेमेंट करे, ठीक है, या उसको उसका राइट्स ना दे, या फिर एम्प्लॉय ही इनडिस्क्रिमिनेट डिमांड कर रहा हो, कुछ भी इश्यूज हो सकता है, या कहीं केस फंसा हुआ हो। तो this act, although this act is enacted by central government, लेकिन इसका implementation has been given to appropriate authority, है ना? इसका देख रेख, ये एक्ट तो सेंट्रल गवर्नमेंट में इनेक्ट कर दी, बट इट्स इम्प्लीमेंटेशन हैज बीन द वर्क ऑफ एप्रोप्रिएट अथॉरिटी। मतलब एप्रोप्रिएट अथॉरिटी में या तो स्टेट गवर्नमेंट आती है या सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों को देखना है कि ये एक्ट ठीक से लग रहा है अपनी जगह। ओके, नाउ कंट्रोलिंग अथॉरिटी। कंट्रोलिंग अथॉरिटी का क्या मतलब हुआ? I already told you that despite gratuity being the legal recognition, sometimes it may arise that there could be some discrepancies in the payment of gratuity by the employer, or there could be some other issues. In that case, you need to have an authority who will be able to resolve these problems, right? We need an authority or not? अगर Yes, आपको ma'am. ग्रेचुटी पेमेंट नहीं मिलेगी या कम मिलेगी तो आप किसके पास जाएंगे? Legal. There should be some controlling authority regarding that. So write down, the appropriate government shall appoint controlling authority in adequate number, क्योंकि एक जगह पे बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, so the number should be adequate for proper smooth functioning of the gratuity payment. Okay. The appropriate government shall appoint controlling authority in adequate number who shall work related to gratuity payment, disposal of claims, or complaints, distribution of gratuity, recovery of gratuity,
एक्सेट्रा। देखो क्या होता है, जब अभी नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे, लेकिन अभी सब सुन लो कि जब कोई एम्प्लॉय ज्वाइन करता है, ठीक है, कोई एम्प्लॉय जब ज्वाइन करता है ऑर्गेनाइजेशन, तो 1 साल काम करने के बाद he has to declare the name of his nominee, ठीक है। नॉमिनी डिक्लेयर किया जाता है ना, इन केस ऑफ डेथ कौन अवेल करेगा ग्रेचुटी बेनिफिट्स, इसकी उसका नॉमिनी अवेल करेगा, उसका नॉमिनी अवेल करेगा ना, या फिर क्लेम Yes, कौन ma'am. करेगा, उसका नॉमिनी क्लेम करेगा। So in those circumstances, what happened? There is a provision of declaration of more than one nominee for the for availing of gratuity benefits, ठीक है। आप एक से ज्यादा नॉमिनी भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इन केस ऑफ डेथ अगर उसको पेमेंट मिलता है तो उसका पेमेंट आधा आधा मिलेगा, उसको मिलेगा ना। लेकिन अगर इसमें घर वालों में कोई डिस्क्रिपेंसी होती है कि नहीं मुझे ज्यादा मिलना चाहिए, या उस तरीके की कोई बात होती है, तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी का ये भी काम है कि कंट्रोलिंग अथॉरिटी विल रिजॉल्व सच मैटर्स आल्सो, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेचुटी से कोई एम्प्लॉयर ने ये मना कर दिया कि मैं आपका ग्रेचुटी पेमेंट नहीं बनता है या फिर मैं नहीं दूंगा, दिस इज माय डिस्क्रिप्शन, ऑल्दो दिस इज अ लीगल, ऑल्दो दिस हैज अ लीगल रिकॉग्निशन, लेकिन अगर एम्प्लॉयर ये कहता है कि मैं पेमेंट नहीं करूंगा, तो आप किसके पास अपनी कंप्लेंट लेके जाएंगे? देयर हैज टू बी सम एप्रोप्रिएट अथॉरिटी, सो दिस इज द कंट्रोलिंग अथॉरिटी, ठीक है। सो इन केस ऑफ डिस्पोजल ऑफ क्लेम्स, जैसे किसी ने क्लेम किया कि मुझे ग्रेचुटी मिलना चाहिए, तो उसको पूरा देख रेख करना और उसको गाइड करना कंट्रोलिंग अथॉरिटी का काम है। नॉमिनी में किसी तरीके का कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको रिजॉल्व करना उसका काम है। और रिकवरी ऑफ ग्रेचुटी, अगर बार बार लीगल नोटिस देने के बावजूद एम्प्लॉयर इज नॉट रेडी टू मेक पेमेंट फॉर योर ग्रेचुटी, देन द कंट्रोलिंग अथॉरिटी will send information to the collector of that place, fine, and then he will recover the gratuity from that employer in the form of land revenue, ठीक है, ठीक है। Akash, switch on your video. Constant, I'll not give you attendance if you do not switch on your video. Throughout the class, you kept your video switched off. So next, right, declaration of nominee. I'm not marking your attendance today, Akash. Right, declaration of nominee. Right, after completion of 1 year of service, after completion of 1 year of service, the employee shall declare the name of nominee. The employee shall declare the name of nominee within 30 days. Ma'am, repeat once. After completion of 1 year of service, the employee shall declare the name of nominee within 30 days. 30 दिन के अंदर, 1 साल के बाद उसको 30 दिनों के अंदर अपने नॉमिनी का नाम डिक्लेयर करना होता है। और इसमें प्रोविजन क्या है कि जो अनमैरिड एम्प्लॉइज हैं वो किसी का भी, एनी इंडियन सिटीजन का वो नाम डाल सकते हैं, बट जो मैरिड है इट इज ऑब्लिगेशन ऑन देम टू पुट द नेम ऑफ देयर फैमिली, ठीक है। अब देखो, हो सकता है there could be a condition where an employer, Priya and Razvi are still writing, are you done writing? हो गया? Yes, ma'am. देखो, this could be a very genuine case कि शायद कोई employer is running out of money, ठीक है, उसके पास genuinely पैसे देने के लिए नहीं होगा,
तो उस केसेस में द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी may get delayed, है ना. पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी हो सकता है कि वो पेमेंट नहीं कर सके तो वो डिले हो जाएगा. बट under those circumstances, this act also gives liberty to them to avail some time, but only after seeking permission from appropriate authority. The employer will seek permission from appropriate authority and tell him that I am unable to make the payment. लेकिन उसके बाद जब वो पेमेंट करेगा, जब भी पेमेंट करेगा, जितना टाइम लेके पेमेंट करेगा, he will not give that amount straight away. He will give that amount at the rate of simple interest. ठीक है. उसके बाद वो जितना डिले करेगा वो सिंपल इंटरेस्ट के तौर पे देगा. ओके. नाउ राइट, नेक्स्ट टॉपिक, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेच्युटी. Right, distribution of gratuity. In case of death of employee, the amount of gratuity shall be paid in case of death of employee, the amount of gratuity shall be paid to the nominee or successor in case of more than one nominee. The amount shall be paid equally to them. The amount shall be paid equally to them. Done? Done writing? Yes, ma'am. देखो, अगर if the employee is alive, he himself will claim gratuity benefits, right? This is understood. This is a natural thing. But in case of his death, what will happen? His nominee or his successor will claim gratuity benefits, right? The one whom he has named in nominee. But it so happens this act gives permission that you can name more than one nominee. In that case, when you name more than one nominee, the distribution will happen equally to all of them. Fine. But देखो, क्या होता है कि जनरली अगर आपने फैमिली में ग्रेच्युटी के लिए नॉमिनी डाला है, हो सकता है कि कोई एम्प्लॉय अपनी बेटी या अपने बेटा का नाम डाले ग्रेच्युटी बेनिफिट्स लेने में, राइट. एंड ये भी हो सकता है कि उसकी बेटी या उसका बेटा is not 18 years of age, right? So below 18, what will they call? Minor. Okay. So minor को payment नहीं होती है until that is 18 years of age. So in that case, what happens? That in case the nominee is a minor, then that amount will be given in your savings account. And अगर father की death होती है और mother उसकी caretaker है, then they will allow mother to use that money. But ऐसा normally होता है कि if it is except mother and father, then they put it in the savings account and only partial withdrawal upon seeking permission is allowed. Right?
Only parents are trusted for this, that you can avail full benefits. इसको पढ़ाना लिखाना या अगर किसी चीज के लिए पैसे का काम. So this was about distribution of gratuity. Fine. Now रिकवरी ऑफ ग्रेचुटी वही बात है कि अगर कोई एम्प्लॉयर रिकवरी है, दिस इज द लास्ट टॉपिक इन ग्रेचुटी दैट यू नीड टू नो, दैट इन केस एन एम्प्लॉयर इज नॉट रेडी टू मेक हिज ड्यू शेयर ऑफ ग्रेचुटी पेमेंट, then the controlling authority will report it to the collector of that place, who is in charge of land and revenue of that place, of a particular place, and then he will make the appropriate recovery in the form of land revenue. Okay, fine. With this note, we end gratuity. Gratuity का टॉपिक खत्म. किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है? If you revise this, how much I have given to you, you don't need to go into too much of details. So एक gratuity के बारे में जानना, gratuity का calculation, ये सब मुझे I think you should know this, even if you don't need to go into details. When you're studying gratuity, you should know the 15 days thing, the 5 years of continuous service thing, what is payment, when can it be forfeited, and what are the conditions in which gratuity payment is made. Okay, वरना आप लोग सारे social security को retirement तक ले जाते हैं. So there are two social security legislations that we cover, ESI and gratuity payment. Fine. तो अभी देखो इसमें Yes, कितने टाइप का सोशल सिक्योरिटी कवर किया. सुपर एनिवेशन, दैट इज रिटायरमेंट. फाइन. ओल्ड एज आपने कवर किया. देन voluntary retirement, that is also retirement benefits. Then you have resignation. Fine, this is one condition, resignation. You have death, you have inculcated death as a social security here. Disablement इसमें included है, और chronic disease को भी हम medical facility या sickness में consider कर सकते हैं. Okay, fine. Yes, ma'am. So in the next class we will start a new unit, a new introduction of labor laws. Right? Laborers are working everywhere. They are the foundation. They are one of the 4 factors of production in any organization, and there are so many dimensions to study labor in our country. So we'll try studying it. We'll figure it out in a simple form from the next class. That will be a lengthy class. You know, you will need 3 to 4 classes for understanding the labor dimensions. There are so many aspects related to labor. Done? Thank you, ma'am. Okay. Chalo. From the next class, we will start labor laws. Right? Thank you, class. Thank you.